ओके, सो इन द लास्ट सेशन हमने वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि इन अ लिफ्ट वेटलेसनेस कब होगा। बट लिफ्ट के लिए मैं डायरेक्टली वेटलेसनेस पे नहीं आने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम केसेस रिलेटेड टू लिफ्ट। सबसे पहले व्हाट यू शुड नो इज, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर हमारे पास एक टेबल है, एक फ्लोर है, एक सरफेस है, उस पे अगर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, तो इन दिस केस mg weight is downwards and normal reaction n is upward. तो if the object is not moving at all, ऑब्जेक्ट का मोशन ही नहीं है, तो आप लिखते हो n equal to mg, where n is called as apparent weight. apparent weight का मतलब होता है as it appears, जब मेजर करेंगे जो वैल्यू मिलेगी that is apparent weight, and mg is the actual weight, the real weight of that body. Okay, अब if I say ये लिफ्ट है, लिफ्ट के फ्लोर पे एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके लिए भी ये ट्रू है। ओके, तो जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना, इफ a is 0 then apparent weight is equal to actual weight, राइट। तो आपको कभी भी बेसिक्स से समझाना शुरू करना पड़ेगा कि किसको आप apparent weight बोलते हो, किसको आप actual weight बोलते हो। दिस बेसिक थिंग्स you need to explain. ओके, हम करेंगे। When we'll write down, we'll write these points, that what is the weight, how do you define weight, because it is nothing but the normal reaction that you feel. अब अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले v 0 था तो a 0 था, अगर v कांस्टेंट होगा तो भी a 0 होगा। क्यों? क्योंकि a इज dv by dt, बट जब v ही चेंज नहीं हो रहा है तो फिर dv by dt इज 0। बट when you have a lift which is accelerating upwards with an acceleration a, तो इस केस में नेट फोर्स इज n minus mg। why n minus mg? क्योंकि ओवरऑल सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए n minus mg। ओके, so net force is nothing but mass times acceleration, that is n minus mg। तो n is equal to mg plus ma। मतलब आप देख रहे हो apparent weight n is equal to actual weight plus another term plus something else। इसका मतलब आप बोल सकते हो that apparent weight of an object inside a lift which is going up with an acceleration a is greater than actual weight। ओके, अब अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी विथ एन एक्सेलेरेशन a, नीचे आ रही मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड्स है, तो आप उस केस में लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। बट नेट फोर्स को हम लोग लिखते हैं ma, दैट इज mg माइनस n। तो आप लिखते हो n इज इक्वल टू mg माइनस ma। सो यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम mg, मतलब इस केस में एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल से कम होगा। ओके, so apparent weight will be less than actual weight। so this idea should be very clear। और आगे जब हम JEE नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो आई विल ट्रेन यू एट अ लेवल कि आपको ऊपर जा रहा है क्या g प्लस ए, मतलब क्या g प्लस ए, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। सिस्टम नीचे आ रहा है क्या g माइनस ए, तो क्या चेंज हो रहा है? ओवरऑल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। If object is at rest,
Resultant acceleration is g. If the object is accelerating upwards, it is g plus a. If it is accelerating downwards, it is g minus a. So this is the level of training that we will be doing. Orally क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको और वो होता है. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो वो एक इंटरेक्शन का लेवल थोड़ा मिस आउट हो गया, बट वी विल मेक इट अप. ऑनलाइन सिस्टम में भी हम वो इंक्लूड करेंगे, राइट? ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल फील वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट, तो अगर a की वैल्यू g हो गई, मतलब द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स बट विथ a इक्वल टू g, मतलब क्या, किसी ने लिफ्ट की रस्सी काट दी, रस्सी काट दी तो इट विल बी अ फ्री फॉल, मतलब a इक्वल टू g. तो यहाँ पे आप a इक्वल टू g डालोगे तो mg माइनस mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया. मतलब द पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इनसाइड दैट लिफ्ट विल फील वेटलेसनेस, बट दैट इज अ डेंजरस वेटलेसनेस. ओके, जान को खतरा है उसमें, तो वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. बट एनीवेज, दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो व्हाट वी विल डू इज, हमको ये पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे अब, राइट? सो देन स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? सो लेट अस कंसिडर अ लिफ्ट. उसमें एक मास रखा हुआ है. ओके, तो अब लिफ्ट जो है वो एक्सीलरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है. इन एनी केस देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिफ्ट. One is mg downwards, one is normal reaction upwards. Okay, so consider a lift with an object placed inside it, with an object placed inside it. Okay, whether the lift whether the lift is at rest or in motion, or in motion, a passenger or object. So the object will experience will experience two forces. पहला force, gravitational force mg, which is directed vertically downwards towards the center of earth. So gravitational force mg directed vertically downwards, vertically downwards. Of course it is towards the center of earth. If you want to mention, just mention it, towards the center of earth. Second is normal reaction force directed vertically upwards exerted by the floor of the lift. Normal reaction force N directed vertically upwards exerted by the floor of the lift, exerted by the floor of the lift, right? देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज apparent weight and mg is called as actual weight. So I'll just try to keep notes as precise as possible. उसको छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे without going into a lot of details. सिर्फ मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा कि normal reaction is called as apparent weight
and mg is called as actual weight. Okay, so this force is the actual weight of the body, is the actual weight, and this force is the normal reaction. Okay, right, तो ये पता होना चाहिए. Let's talk about cases one by one now. पहला केस जैसे मैंने आपको बताया, lift is at rest. So lift is at rest or lift is moving with constant velocity. So lift having zero acceleration, zero acceleration, acceleration, zero acceleration. That is v equal to 0 or v equal to constant. Okay, so in this case, as I told you, net force is 0. Okay, so you can write down this happens when the lift is at rest or it is moving upwards with or downwards with constant velocity. So this happens when the lift is at rest or the lift is moving upwards or downwards, moving upwards or downwards with constant velocity. Therefore, you will have upward force normal reaction. मैं एक काम करता हूँ for your understanding, मैं एक diagram draw करके रख ही देता हूँ so that you understand what is happening on the block which is inside this lift. Okay, तो ऐसा है, वो सरफेस को टच नहीं दिख रहा है बट इट एक्चुअली इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, तो दैट्स फाइन नाउ. ओके, so in this case you already know this is mg, this is normal reaction n. So what we can write down here is, therefore अभी यहाँ पे आप mg minus n लिखो या n minus mg लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिफ्ट इज नोवेयर. तो n minus mg is net force, but net force is 0. Therefore n equal to mg, which implies apparent weight. Okay, so why what I have made something wrong, this force is the normal reaction की जगह पे मुझे लिखना था this force is the apparent weight. I am sorry, this force is the apparent weight of the body. So therefore in this case you have apparent weight इक्वल टू एक्चुअल वेट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एपरेंट वेट होता है. एपरेंट मतलब एज इट अपीयर्स, मतलब एक जो एक वेइंग मशीन मेजर करेगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मेजर्ड वैल्यू. दूसरा केस, इफ वी हैव अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग upwards, so it is having net upward acceleration. So lift having net upward acceleration, having net upward acceleration.
that is AU. Okay, so in this case, what we can say is this happens when lift just starts moving upwards, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इनिशियल फेज में एक्सेलरेशन होगा. Okay, so okay, so this happens when this happens when lift just starts moving upwards, moving upwards. Right. Therefore, as you know, since the net acceleration is upward, since the net acceleration is upwards, the upward force must be greater. The upward force must be greater. Then you can write this as, therefore, upward force is normal reaction minus downward force is mg equal to F net, but F net is m into A. Therefore, you can write down n is equal to mg plus ma. Therefore, you can say n, which is apparent weight, is equal to actual weight plus something. मतलब apparent weight is greater than actual weight. This is what you can say. Okay, right. तो weighing machine जो है वो greater reading record करेगा compared to mg. So the weighing machine records a reading greater than mg. Alright, तो ऐसा है वो. Right, then case 3. So we have case 1, case 2, and now we'll have case 3. Just a minute, just a minute. Case 3, as we were talking about lift having a net downward acceleration, lift having a net downward acceleration. That is, let us say AD is net downward acceleration. So ये कब होता है? When the lift just starts moving downwards. Okay, so this happens when this happens when the lift just starts moving downwards. अभी वही चीज है, since the net acceleration is downwards, the downward force must be greater. Since the net acceleration is downwards, the downward force, the downward force must be greater. इसलिए आप लिख सकते हो mg minus normal reaction is equal to net force. Net force is mass times of acceleration. Therefore, you can write normal reaction is mg minus ma. Therefore, apparent weight is less than actual weight. तो किसी को अगर लग रहा होगा वेट बढ़ गया है
तो फिर जाओ बार बार लिफ्ट में ऊपर जाओ और ऊपर से नीचे लिफ्ट में आओ। You have to do this. पहले तो ग्राउंड फ्लोर से 20th 30th फ्लोर तक ऊपर चढ़ के जाओ, फिर वेइंग मशीन रखो, फिर उस पर खड़े हो जाओ एंड प्रेस द बटन टू गो डाउन। फॉर अ व्हाइल यू विल फील कि वेट कम हो गया है, फिर वापस से कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। पर इन दिस प्रोसेस डेफिनेटली यू विल लूज वेट, क्योंकि हर बार आपको सीढ़ी से ऊपर जाना है और लिफ्ट से नीचे आना है। तो दिस इज अ गुड थिंग दैट यू कैन डू। वेल एनीवेज, जस्ट on a lighter note, it was a joke. So last case, case number 4th, weightlessness. Weightlessness in a lift. So ये केस क्या है? This happens when lift moves in downward direction with a d equal to g, that is free fall. किसी ने रोप काट दिया, गए काम से। Okay, so this happens when the lift moves downwards with AD equal to G. ओके राइट, तो ये मैंने ऐसा सफिक्स में AD AD AU AU लिखना चाहिए, नहीं लिखा है, डजंट मैटर रियली। ओके, therefore in this case n will be mg minus mg, that is 0. Hence यहाँ पे लिख देता हूँ that is free fall. So hence the object will feel weightlessness inside that lift. Okay, right, so that's all that you need to write down while studying different conditions inside a lift. Let's move to next topic. तो ग्रेविटेशन इजी भी है और ग्रेविटेशन इंटरेस्टिंग भी है, सो इट इज बोथ। नेक्स्ट थिंग, अभी आगे हमको क्या देखना है? व्हाट वी वांट टू स्टडी इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। मतलब हाउ मच टाइम डज अ सैटेलाइट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। अर्थ का एक चक्कर लगाने में एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ओके, तो देखो बहुत सिंपल है, केस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक मतलब 3 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आई विल पुट देम वन बाय वन। पहले तो देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम टू अंडरस्टैंड। ये अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जो है वो सर्क्यूलर ऑर्बिट में है, तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस जो होता है ये हम लोग लेते हैं स्मॉल r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस। दूसरा, you should know that since the satellite is performing circular motion around the earth, the velocity that this satellite has is critical velocity। क्योंकि ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, इसका मतलब ये होता है कि इस सैटेलाइट का जो स्पीड होगा वो होगा क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, सो बाय डेफिनेशन मान लेता हूं इसका मास m है और का मास कैपिटल M है। बाय डेफिनेशन व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में सैटेलाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई r, मतलब सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द ऑर्बिट अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल T। देखो टाइम पीरियड के लिए हमेशा स्पेसिफिकली कैपिटल T ही यूज होता है, बिकॉज इट टेल्स यू कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया।
इफ यू यूज स्मॉल टी दैट कैन बी एनी टाइम। हो सकता है कि लिफ्ट ने एक चक्कर कंप्लीट नहीं किया है, लिफ्ट इज सॉरी सैटेलाइट ने एक चक्कर कंप्लीट नहीं किया है, सैटेलाइट इज समवेयर एट पॉइंट बी एट टाइम टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का मतलब होता है एक पीरियड कंप्लीट हो गया, राइट। So we have critical velocity is equal to 2 pi r by t. But we know that critical velocity का expression हम derive कर चुके हैं, वो था अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ इफ वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी हैव जी एम बाई आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम। 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, इसका मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। ओके, तो यू कैन से स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to cube of orbital radius of the satellite around the earth. Okay, तो in short बोलते हो square of time period is proportional to r cube। इसका फॉर्म जो है इट इज सिमिलर टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिर्फ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि वहां पे सर्कुलर मोशन नहीं था, वहां पे इलिप्टिकल ऑर्बिट था। तो इट इज मोर और लेस द सेम फॉर्म। बाय द वे, मैं इस इक्वेशन से फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन t is equal to under root of r by gm into 2 pi r, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो ये आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, r को जब स्क्वायर रूट में ले जाओगे तो r स्क्वायर करके ले जाओगे, तो r स्क्वायर और ऑलरेडी r था तो r क्यूब बाय gm। ओके, बट दिस स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h। ऑलराइट, तो लिख सकते हो। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। वैसे बाय द वे वी आल्सो नो दैट, आपको याद होगा, बट acceleration due to gravity at height h is given by gm upon r plus h का स्क्वायर। इसका मतलब gm is gh upon r plus h का स्क्वायर। therefore time period t is 2 pi under root of r plus h cube upon gh into r plus h का स्क्वायर, cancel, right। So you can also write it down like 2 pi under root of r plus h upon gh, or simply it is 2 pi small r by gh, right। फिर आप स्पेशल केस की भी बात कर सकते हो। स्पेशल केस मतलब कोई स्पेशल केस नहीं है। इफ हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो h plus r is approximately equal to r, that's it। so time period t will be 2 pi under root of capital R by g। तो ये हो गया स्पेशल केस बोल दिया इसको। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड इजीली। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वी डिड नाउ इज टू फाइंड आउट, वी वांटेड टू फाइंड आउट what is the time period, how much time does it take for a satellite to complete one revolution around the earth। सबसे पहले हम बोलेंगे कि क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, तो जो भी वेलोसिटी सैटेलाइट के पास है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल स्पीड है। क्रिटिकल स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होगा और टाइम पीरियड है कैपिटल टी।
तो VC is equal to 2 pi r by t, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल VC क्या है वो लिख लो, VC is gm by r, so it is 2 pi r by t. Then squaring on both sides, therefore you'll have gm by r equal to 4 pi square upon t square into r square. Therefore you will have t square is equal to 4 pi square by gm r cube, right? क्योंकि अब पाई स्क्वायर जी एम कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. Also, from this equation, we have t is equal to under root of r upon gm into 2 pi r. ये r को स्क्वायर करके अंदर ले जाऊंगा तो r क्यूब बन जाएगा. फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, what I can write is t is equal to 2 pi under root of r plus h का क्यूब अपॉन gm, और gm आपका आता है, if you remember, it is acceleration due to gravity at height h into r plus h का स्क्वायर. ये और ये कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड इज 2 pi r plus h by gh. स्पेशल केस, h is very less than r, मतलब height of the satellite is very small compared to radius of earth, so you will have r plus h approximately equal to r. Therefore time period will be 2 pi under root of r by g. So I don't really see anything difficult. In fact, it is interesting. So you can find out time period of a satellite around the earth, or you can set time period of satellite around the earth. Okay, so let's note down this thing. So the time taken by a satellite to complete one revolution to complete one revolution around the earth around the earth is its time period. Okay, so let us consider a satellite of mass m at a height h above the surface of earth. Consider a satellite of mass m, mass m, projected to a height h, yeah, at height h, at height h from the surface of earth, from the surface of earth. Okay, so let the satellite revolves, let the satellite revolves around the earth, around the earth in circular orbit. Okay, therefore the satellite has or the satellite possesses critical velocity, critical velocity VC. Okay, and let the time period of the satellite, time period of the satellite
B capital T. Therefore, critical speed is equal to distance upon time, but distance covered in one revolution is nothing but circumference of the orbit, circumference of the orbit divided by time period divided by time period. Therefore, you can write Vc is equal to 2 pi r upon t, where did we mention small r equal to capital R plus h? No, where small r is capital R plus h. Okay, but Vc is equal to under root of Gm by R. Therefore, you have under root of Gm by R equal to 2 pi r by t. Let's say equation number 2, let's say equation number 1, and we'll say from 1 and 2. Okay, therefore if I square, and I'll write down this as equation number 3, therefore if I square, we have Gm by r equal to 4 pi square r square by t, and therefore we can write down t square is equal to, t का स्क्वायर नहीं लिखा, लिख देते हैं t square is equal to 4 pi square upon gm, 4 pi square upon gm multiplied by r cube. Therefore, t square is proportional to r cube since gm are constants. Okay, right. This is what you have. Then, therefore, square of time period, square of time period is proportional to cube of cube of radius of the orbit, cube of the radius of the orbit. Okay, also from equation 1, equation number 3, sorry, आपको याद होगा इक्वेशन 3 हमने लिखा था, इसमें से मैं t लिख लूंगा, t is equal to 2 pi under root of r cube by gm. Okay, so you can write this as 2 pi under root of r plus h cube by gm. Therefore, you have t is equal to 2 pi r plus h cube upon gm is gh into r plus h का स्क्वायर्ड. आप लिख सकते हैं यहाँ पे since gm is gh r plus h squared. Therefore, you will have time period t is equal to 2 pi under root of r plus h by gh. Okay, so we have this. Now, this expression gives us, or you can simply write them as 2 pi under root of r by gh. So this equation number 4, equation number 5, and other equations gives us, this gives expression for time period of a satellite around the earth. This gives
expression of time period of a satellite around the Earth. Of course, the orbit is circular. Let's discuss special case. और ये कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा केस है. Special case when the satellite is close to the surface of Earth. So when the satellite revolves close to the surface of Earth, so you in this case you have R plus H approximately equal to R. Let me make some space. Just a minute. So in this case, you have therefore T minimum, because then it will be the minimum time period will be equal to 2 pi under root of R by G. तो ये हो गया आपका स्पेशल केस. ओके, तो since we have less time, I cannot start next topic. It is a very simple topic, binding energy. हम लोग वो कल करेंगे. I will take this time to repeat what we have done so far today. तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ लिफ्ट का केस देखा. लिफ्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्सेस होंगे, mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स. लिफ्ट अगर रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, तो इन दैट केस n इक्वल टू mg, और n है अपरेंट वेट, mg है एक्चुअल वेट. तो अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट. if lift is moving upwards, तो n equal to mg plus ma आता है. That is apparent weight is greater than actual weight. Lift if it is moving downwards with net acceleration ad, तो apparent weight ये less than actual weight आता है. If the lift is moving down but with acceleration ad equal to g, उसको बोलते हैं free fall. Normal reaction हो जाएगा 0, मतलब weightlessness. The object will feel that the object does not have any weight. फिर हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. बहुत सिंपल है. एक सैटेलाइट ले लिया अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर. क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो वेलोसिटी जो होगा क्रिटिकल होगा. क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर टाइम कैपिटल टी. बट वीसी इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर. तो अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी. वी आर एट इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 को स्क्वायर कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया. टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब. 4 पाई स्क्वायर जी एम कॉन्स्टेंट, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. दैट इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of a satellite is proportional to cube of the radius of its orbit. राइट. तो इक्वेशन 3 को ही हमने सिंप्लीफाई कर लिया. 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम. स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच एंड जी एम इज जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर. ये करते करते हम इक्वेशन 5 पे आ गए. Equation 5 gives us time period of a satellite at a height h. Okay. अब अगर सैटेलाइट इट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कुछ नहीं है, जी एच की जगह पे जी और स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा. दैट्स इट. सो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. We will complete theory tomorrow, and tomorrow we will also, in the next session I mean, we'll also start with numericals.